सो हमारी टॉक का जो इस वक्त पॉइंट है ऑफ डिस्कशन वो है व्हाट इज़ न्यू इन आर्ट। तो राशिद और मैं जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने से बहुत सोचा कि आर्ट में नया क्या है, बिकॉज आर्ट इन इट सेल्फ इज समथिंग दैट थ्राइव्स ऑन इनोवेशन। जिद्दत में वो थ्राइव करती है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट how that happens and who gets to define the new directions. Art in itself is a complete visual language. It's an independent language with its own visual literacy. We're surrounded by images all the time, and we are now increasingly entering an era where we are looking at all these expanded forms of making and sharing with these expanded tools and technologies, and especially AI, artificial intelligence, which is at the doorstep of art. अभी कल जब मैं BNU का थीसिस देखने के लिए गई थी तो राशिद राणा जो अभी स्टेज पे आने वाले हैं उनके बेटे के साथ, 8 साल के बेटे के साथ मैं काम देख रही थी। और वो सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज एक बच्चे की जो आंख होती है वो बहुत फ्रेश होती है। इट्स वेरी इंस्टिंक्टिव, इट्स वेरी अनऑर्केस्ट्रेटेड, इट्स वेरी अनएल्ट्रेटेड। उसको उस पर कोई लेयर्स नहीं होती ऑफ लर्निंग। तो BNU में वहाँ पे एक क्वारंटीन हुई थी स्पेस, उस पर रेड टेप लगी हुई थी। तो उसने कहा बाबा ये क्या है? तो राशिद कहते हैं ये आर्ट है। उसके बिल्कुल साथ ही BNU में कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसकी दूसरी तरफ। तो वो कहते हैं क्या, वहाँ पे भी क्वारंटीन हुई थी, रेड टेप। तो वो कहते हैं बाबा क्या ये भी आर्ट है? तो ये बात कि क्या आर्ट है क्या आर्ट नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, और आर्ट की क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। What is it that distinguishes कि आर्ट क्या है और क्या नहीं है? और जब मैंने एज ए सेड मैंने मीर के साथ ये पूरा टूर लिया उस 8 साल के बच्चे के साथ, तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। मैंने उससे कहा कि कब एक काम एक आर्ट बन जाता है? तो वो कहते हैं जब वो वियर्ड हो जाए। और मैंने कहा अच्छा और बताओ क्या होता है? वो कहते हैं कि जब मुझे उसको देखने का दिल चाहे और जब मुझे उसके साथ इंटरैक्ट करने को दिल चाहे। तो ये बड़ी ट्रू डेफिनेशंस है व्हाट इट रियली मीन्स टू बी लुकिंग एट समथिंग दैट इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और अब आर्ट की मीनिंग इतनी एक्सपैंड हो चुकी है with the kind of ways with which we make, you know, the sensory experiences, the collaborative works. We have data-driven works that where we are able to eat art, we're able to breathe art, we're able to smell art and not just see art. But who gets to expand on these ideas? Who gets to define and redefine? It's the people with vision and the people with that creative ability and that acumen who are able to make a mark that is lasting. One such example is right amongst us, and with no further delay, I would like to welcome Mr. Rashid Rana on stage. Thank you, Rashid. It's an honor and a privilege for us, for you to be here. To open up this talk, so through his work, we will talk about through his work trajectory and ideology, we will be able to make sense of where we are headed as a creative community. And through his trajectory's lens, we'll be able to see कि आर्ट में नया क्या है। राशिद के बारे में मैं भी इंट्रोडक्शन दूंगी फॉर्मल, बट मैं इतना सी बात कहूंगी कि when you become a star, and he's our pride, when you become a star, एक चीज होती है that you lose the ability to surprise. But with Rashid Rana, that never happens. He never ceases to surprise us. And we'll see it through the body of work over 20 decades, जिसमें हम अभी बात करेंगे. Let me formally introduce Rashid Rana. Rashid Rana is one of the leading artists in South Asia today. He is known for his conceptual innovation and dramatic visual strategies. He is the recipient of the 2017 Game Changer Asia Art Award by the Asia Society in New York, and recently the Sitara-e-Imtiaz, a prestigious civilian honor conferred by the President of Pakistan.
His works are housed in prestigious collections including the British Museum London and the Metropolitan Museum of Art. He has a long CV, but I'll make it short because we have 40 minutes. Primarily he's known for his artistic practice, but he mediates between being a curator, being an educator, and being an artist. He is the founder member of the Beacon House National University, the School of Visual Arts and Design in Lahore, and currently he's the dean there. And one of his most favorite and most famous projects, the Pakistan Pavilion in Dubai, recently won the Best Pavilion Award exterior by the CEO Burj, and we'll talk a lot more about it in detail. That project, I'm sure a lot of you have seen it over social media, but that project attracted millions of people from all over the world, and we'll know why just in a bit. So let's just begin and dive straight into his practice. Okay, so Rashid, you began, you have a very diverse portfolio, and you began as a painter. You were trained as a painter. And then your practice evolved gradually over these 20 years. From 2D to 3D to a moving image, and then to solitary to collaborative works. Can you talk about that transition from us, because this is one of his very early works, and he's a graduate of the National College of Arts with his degree in painting. And then this came in 2002, and this was a time when there was very little digital media being used by artists, and Rashid Rana was the first person to create this, a seminal work that kind of marks his trajectory into the digital realm. The work is called I Love Miniatures, and it's from one of his micro and macro series, where when you zoom into that image, it is a combination of multiple billboards that you see in and around our visual culture. So let's. Sorry about this. Okay, we're back. Rashid, before, are we waiting? Yeah, Jayegi, तुम्हारा slide. Thank you, Rabia. Yeah. Assalamu alaikum, everyone. It's very heartening to see an audience which is not necessarily art-centric audience. हमारे यहाँ आर्ट के हल्के बड़े महदूद किस्म के हैं. Or I really appreciate this initiative on part of PLF to make art and discussion around art accessible to a much wider audience from so many different backgrounds, people coming from different backgrounds. यहाँ मैं बताता चलूँ कि बहुत कम लोग पाकिस्तान में जानते हैं, because हमें जो मीडिया है वो मुर्गों की लड़ाई दिखाने में जब मसरूफ़ है, तो उस दौरान हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल्स, स्पेशली फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट जिसे हम अक्सर कहते हैं, दे आर डूइंग वंडर्स. दे बिजी विदाउट एनी सपोर्ट और पेट्रनेज फ्रॉम द कंट्री. दे आर बिजी चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ द कंट्री इन द लास्ट 2 decades. ये एक ऐसा क्वाइट रेवोल्यूशन है जिसके बारे में बहुत कम पाकिस्तान में जाना जाता है. आई होप कि ये जो 20-25 लोग हैं कम अज़ कम कंटेम्प्रेरी आर्ट से वाबस्ता हमारे आर्टिस्ट जो इंटरनेशनली परसेप्शन मुल्क की चेंज कर रहे हैं, उनको वक्त आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हमारे यहाँ अवेयरनेस बढ़े, और ये जो इवेंट है ये सिलसिले में एक कदम है. कमिंग बैक टू राबिया's इंट्रोडक्शन एंड इन दी क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड, कि मेरे बारे में जो बात ये कर रही थी कि मेरे काम में एक ट्रांजिशन है पेंटर से डिजिटल आर्टिस्ट का, या डिजिटल आर्टिस्ट में टर्म तो पसंद नहीं है, लेकिन कम अज़ कम काम की हद तक जो ट्रांजिशन है, मैं ये समझता हूँ कि पिछली 2 दहाइयों में जो हमारी ज़िंदगियों में चेंज आई है, बल्कि 3 दहाइयों में कहना चाहिए, वो शायद इससे पहले किसी ने इतनी रैपिड चेंजेस हिस्ट्री में नहीं देखी. स्पेशली मेरी जनरेशन, जिसको जनरेशन एक्स कहा जाता है, जो लेट 60 से लेके अर्ली 80s में जो पैदा हुए हैं, हमने 1980s में देखा कि VHS टेप आती है, VCR आता है, और 10 साल के अंदर वो बोरिया बिस्तरा गोल करके चला भी जाता है.
जो लोग VCR के ज़माने से हैं वो याद कर सकते हैं कि किस तरह से वो हमारी ज़िंदगियों का कितना ज़्यादा हिस्सा था और अब वो नापैद है और अब वो एग्जिस्ट नहीं करता. दिस इज द पेस विद थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. थिंग्स डू नॉट चेंज इन डेकेड्स बट दे चेंज एवरी ईयर. तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, हर तरह की चेंज से भी सेंसिटिव होते हैं. सो जो हमारी ज़िंदगियों में आप देख रहे हैं, स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, हर इंसान इस्तेमाल करता है. तो टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा बन चुकी है. तो आर्ट इज़ नो एक्सेप्शन. आर्ट उसमें शामिल है और इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे जैसे जो हैं उनका काम इवॉल्व हुआ. मुझे मौका मिला early on to remain and to stay open to possibilities, and that is the highlight or the core idea that lines through my practice. I remain open to possibilities. तो जो पेंट मैं कर रहा था तो मुझे लगता था कि उसके अंदर एक कोशिश है कि एब्सोल्यूट ओरिजिनलिटी अचीव की जाए, कि कोई ऐसी चीज जो जैसे कभी पहले बनी नहीं है, जबकि ये एक धोखा है. मैं ये समझता हूं कि एब्सोल्यूट ओरिजिनलिटी डजंट एग्जिस्ट. सो द मोमेंट आई गेव माई सेल्फ दैट मच ऑफ फ्रीडम कि हर एब्सोल्यूट ओरिजिनल कुछ नहीं होता, बिल्कुल नया कुछ नहीं होता. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और अगर आप उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, उन एग्जिस्टिंग इमेजेस को रीफॉर्म और रीअरेंज कैसे करते हैं, दैट कैन क्रिएट न्यू मीनिंग. तो मेरा रोल मैंने जो अस्यूम कर लिया उस वक्त के अंदर अर्ली 2000s में, वो एक ऐसे आर्टिस्ट का था जो एडिटर ऑफ इमेजेस है, जो इस खब्त में मुब्तला नहीं है कि मुझे बिल्कुल एक इंतहाई दुनिया की कभी कोई चीज़ ऐसा ना हो जो स्क्रैच से बनाया जा सके, ऐसा मुमकिन नहीं है. सो दैट गेव पाथ, दैट गेव राइज. एंड ऑल्सो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे मुल्क जो ग्लोबल साउथ से जिनका ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हम कहते हैं, जनरली जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, अवे फॉरवर्ड की, तो या तो हम एडवांस कंट्रीज की तकलीद करते हैं, फुटस्टेप्स में चलते हैं ये सोचे बगैर कि आप हमेशा पीछे रहेंगे, या फिर हम ये करते हैं कि अपने शानदार माजी में के रोमांस में रिफ्यूज ढूंढ लेते हैं. और ख़ास तौर पे जबकि हमारा माजी है भी शानदार, एक स्प्लेंडेड मुगल पास्ट है जिसमें अक्सर हम तो आर्ट में भी होता है कि न्यू मिनिएचर, जब मैं एज एन आर्टिस्ट वाज एंटरिंग द प्रोफेशनल फील्ड, तो न्यू मिनिएचर एक बड़ी वेल रिसीव्ड आइडिया था मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर, मुगल आर्ट की तकलीद. तो आई थॉट कि ये एक पन है, जो ये काम आप दिखा रही थी राबिया, जिसके अंदर आपको मुगल एम्परर नजर आता है, ये एक पन है, एक सार्काज़म है कि जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने माजी में हमेशा फंसे रहेंगे, इंटरनली भी और आउटसाइड द कंट्री. तो वो एक बेट है. बट व्हेन यू कम क्लोज, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस, एंड व्हाट यू सी इज व्हाट वी आर हैव अराइव्ड टू. सो मैं ये समझता हूं कि जो वे फॉरवर्ड है आर्ट में या किसी भी और चीज में, एज समबडी फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड, हमें बिल्कुल फ्रेश सोचना है और नई लेगेसीज और नई ट्रिजेक्टरीज क्रिएट करनी है. So this has become the ideology, basic principle of my practice, which led to works like these. Yes, so Rashid, आपकी काम में एक underlining theme है, एक underpinning kind of concern, which is about duality and the question of duality, about the remote and the immediate, and about duplicity. और वो dichotomy आप multiple तरीके से manifest करते हैं अपने काम में, जो कि आपके काम में, जो कि हम आगे series देखेंगे. बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी सोच में भी फ्रॉम अ मोर एनालॉग वे ऑफ वर्किंग टू अ मोर डिजिटल वे ऑफ वर्किंग, एक सोच में भी तब्दीली आई. From how he started off with how he worked with his handwritten notes to, when I was looking through his portfolio, I found this very interesting. That it completely changed the way you also kind of make meaning, and you connect your thoughts together. And also from the way his studio was back in 1996, a Painterly studio, to how it was in the middle in 2001 with a very outdated computer that we see now, to a very kind of refined studio that deals with what Rashid Rana's work is today. Another very iconic work. So we'll skim through very quickly
through his older work so that we get to where we want to really root our discussion. ये वाला काम इनका एक iconic काम है, which is called the red carpet. It also talks about the dichotomy where the zoomed in image. So it's a series, it's a micro series where when you zoom out, it's a red carpet, and it was made at the time when there was when 9/11 had happened. There was a lot of bomb blasts that prevailed kind of through the major cities and across Pakistan. So when you zoom in, you see a slaughterhouse. And that is the irony. Har kaam mein, there are multiple series where there is a paradox and an irony hidden. There's conflict and then contradiction in the work. So when you zoom in, there's a slaughterhouse. It's a slaughterhouse. Ek aur kaam inka, which was recent, it's Together Alone series, where he had crowdsourced people and invited them to be part of the work, in the sense that they had to take a selfie in front of the mirror and share it. So that database created this work, which was called Together Alone, where the micro images are of all the people that contributed to the macro image. This series, it's the transliteration series, is where Rashid kind of started loosening up and used digital material in itself as a way of painting. This work, War Within Rashid, would you like to talk about this a little? Yes, but just to add to the point that I was trying to raise earlier about contemporary, or not just my practice, but practice of my colleagues who are labeled under the larger umbrella of contemporary art, as compared to modern art. हमने देखा कि history past में in the second half of the 20th century अक्सर अवाम नास में लोग ये कहते हैं कि हमें आर्ट समझ नहीं आता, we don't get art, और you can blame them because artists जो है वो थोड़े से detached हैं एक पॉपुलर सेंसिबिलिटी से, और वो किसी एक और तरह की यूनिवर्सैलिटी ढूंढ रहे थे जो कि शायद एग्जिस्ट नहीं करती थी. सो कंटेम्प्रेरी आर्ट, अगर आपको मौका मिले, आप अगर अब तो हर कोई, आप इंटरनेट गूगल सर्च कर सकते हैं, आप सिर्फ कंटेम्प्रेरी आर्ट डालेंगे एंड यू विल सी वर्क्स ऑफ मेनी अमेजिंग आर्टिस्ट, सम ऑफ देम आर सिटिंग हियर एक्चुअली, और आप देखेंगे कि वो जिंदगी से बहुत करीब है और बहुत सारी फेमिलियरिटी आपको नजर आएगी, उसमें मुश्किल नहीं है, और आप उसको देख के उससे रिलेट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं. आप परेशान ना हो मेरी कॉलीग राबिया की बहुत सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, डुअलिटी और डिस्कोर्स की, लेकिन बजाते खुद जो आर्ट है कंटेम्प्रेरी आर्ट, वो बहुत आम फहम हो चुका है और वो जिंदगी से बहुत करीब है. जिस तजाद की आपने बात की वो मेरे अक्सर कामों में एग्जिस्ट करता है, डुअलिटी जिसका जिक्र कर रही थी. मेरी बहुत जल्द मुझे अर्ली ऑन इन माई करियर आई रियलाइज के एज राइटर्स, एज आर्टिस्ट, एज कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एनी काइंड, हमारी अक्सर ये कोशिश होती है कि हम एक सच में यकीन कर लें और उस सच को प्रोपोगेट कर दें अपने काम के थ्रू, सीरीज ऑफ 6 पेंटिंग्स, 3 नॉवेल्स, जैसे भी. वेयर एज सच तो कोई एक नहीं है, देयर आर मल्टीपल रियलिटीज दैट को एग्जिस्ट. दैट अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो ऑब्वियसली वी ऑल फील वेरी पैशनेट एंड इमोशनल अपने मुल्क के लिए कि हमारा मुल्क जो है वो जीते, और हम एक एनोमोसिटी की हद तक एक इंडिया की तरफ आ जाता है. लेकिन जब हम इंडियन फिल्म देखते हैं तो हमसे कोई आगे नहीं है इंडियन फिल्मों के लव में. सो ये बहुत सारे तजाद हैं, तजाद कह लें या यूं कह लें कि वो एक पैरेलल रियलिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं. तो मुझे बहुत अर्ली ऑन अपने करियर में समझ आई कि मैंने किसी एक सच को एम्ब्रेस नहीं करना, जो मल्टीपल ट्रुथ्स हैं उनको लेट देम को एग्जिस्ट जेंटली विद इन माई प्रैक्टिस, या अगर उनका कोई मुकालमा होना है तो वो व्यूअर के माइंड में होता रहे, मुझे कुछ उसका फैसला नहीं करना. तो मैंने ऐसे काम क्रिएट करने शुरू किए जिसके अंदर मैंने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जहां पे जो पोलैरिटी है, जो बहुत एक्सट्रीम तजाद है दो तरह की रियलिटीज का, उसके दरमियान में जो कोई कहानी बुनी जा सकती है वो व्यूअर खुद करना शुरू कर दे. तो ये पहले मुझे एक सीरीज दिखा रही थी मिस राबिया, जिसमें मैक्रो इमेज इन कॉन्ट्रडिक्शन है माइक्रो इमेजेस के साथ, हजारों इमेजेस जैसे हैं. लेकिन ये बाद में मेरा काम प्रैक्टिस इवॉल्व हुई इनटू समथिंग जहां पे मैं एक किसी भी वक्त से और मुकाम से कोई एक इमेज लिया, जैसे ये एक 17th सेंचुरी फ्रेंच आर्टिस्ट की पेंटिंग है दावीद की, उसको लिया डिजिटली और उसको काट के हिस्सों में तकसीम किया और उसको दोबारा रीअसेंबल किया टू रिजेंबल, टू लुक लाइक
another image from another time and another place. क्योंकि हम ये समझते हैं कि जैसे हम बहुत as human beings हम मुख्तलिफ eras से, अदवार से, खित्तों से, मुल्कों से मुख्तलिफ हम बहुत एक दूसरे से अलग थलग हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारे अंदर आई थिंक ज्यादा चीजें कॉमनैलिटीज हैं ह्यूमन बींग्स और बहुत कम डिफरेंसेस हैं. और स्पेशली अक्रॉस टाइम एंड रीजन की जो ये ट्रांसलिटरेशन है, विजुअल ट्रांसलिटरेशन के एक वक्त की कोई इमेज है और वो दूसरे वक्त की बात कर रहा है, ये इस तरह का इस तरह की कोई एक चीज है इन काम के अंदर. और ये फर्क यूं है पिछले काम से कि उसके अंदर आपको पास जाके देखना पड़ता है. यहाँ पे आप आंख का फोकस चेंज करते हैं और पास के मैक्रो इमेजेस भी, माइक्रो भी और मैक्रो दोनों नजर आ जाते हैं. एक गुजारिश है मुंतजमीन से कि अगर वो दरवाजा बंद कर दें और ये जो ट्रैफिक है इसको लिमिटेड कर दें, बिकॉज मेरा टेंशन स्पैन बड़ा कम है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ. सो अगर इसकी कोई आमदरफ्त किसी एक जगह से कर दीजिए, सो विच इज नॉट वेरी डिस्ट्रैक्टिंग. अच्छा, आपकी काम की जो ट्रांजिशन है फ्रॉम पेंटिंग टू डिजिटल and then from digital to something that was more concern based, where aapki jo underlying ideas hain of this unfixed and non-prescriptive ideas of identity, wo you know they maintained, lekin aapke kaam ki jo mediums hai wo badalte gaye. Let's just have a look at those works, and we can talk about them. So this is his work, Rashid Rana's work in 2018. It's called Desperately Seeking Paradise, where he expanded on his mediums, and this is a work made in stainless steel. And I'll just skip through this work. This is its detail. ये जब आप गैलरी में एंटर होते हैं, पिछले इमेज में जाए, शुरू का पहला इमेज, तो आपको लगता है कि ये कोई स्टेनलेस स्टील, पहला इससे पहला स्टेनलेस स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है, या आपको ये भी तस्वर आता है कि शायद ये किसी हाई राइज बिल्डिंग का एक चंक लेके उसको निकाल के एक आके कमरे में लाके रख दिया है, जिसके अंदर वो अपनी सराउंडिंग की बिल्डिंग्स को, हाई राइज बिल्डिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है. The more you experience the work, it काम finally starts चारों तरफ चलने में काम चेंज होता बिल्कुल, रहता है, तो इट्स मोर इंटरैक्टिव इन दैट सेंस. ये 2008 से है. 2008. जब इसके पास जाते हैं, एक स्लाइड पीछे करें, 2 स्लाइड्स पीछे करें, ये एक और पीछे, एक और नहीं, आप आगे जा रही हैं. ये देख रहे हैं, अब ये पास आ गया अब इस बिल्डिंग नुमा चीज के, और इसके पास आपको नजर आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग है कुछ इमेजेस की, और जो हाई राइज बिल्डिंग बना रही हैं असल में वो लाहौर के घर हैं, तकरीबन बहुत सारे, अगर सारे नहीं तो तकरीबन सारे लाहौर के घरों की फसाद डॉक्यूमेंट की गई 2006 से लेके 2008 तक. और उन इमेजेस की हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग से वर्टिकलिटी जो है ना हाई राइज बिल्डिंग्स की, जो पिछले इमेज में, इससे पिछले इमेज में ये जैसे आपको नजर आ रहा है, तो ये काम जो है ना वो रेफरेंस करता है, इशारा करता है 9/11 की तरफ, जिसके बाद से अक्सर लोगों ने समझा कि शायद मजहब वजह है कॉन्फ्लिक्ट की, मजहब शायद वजह है तखरीबकारी की, टेररिज्म की, जबकि ऐसा शायद मेरे नजदीक नहीं है. इट्स द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, sheer uneven economic disparity that exists in this world, जो इतनी तफरीक है दुनिया के अंदर माशी तौर पे, वो असल में वजह है कॉन्फ्लिक्ट की. और ये वो जन्नत नहीं है जो हम इस जिंदगी के बाद सिर्फ तलाश करते हैं. हम में से हर कोई इस जिंदगी के अंदर भी एक जन्नत तलाश करता है, और वो हक रखता है कि उनके मुल्कों में खुशहाली हो. तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग से वर्टिकलिटी जो क्रिएट की हाई राइज बिल्डिंग की, जो ये इस तरफ इशारा है कि जो वर्टिकल डेवलप्ड सिटीज हैं ये रेस्ट करते हैं मेहनत पे और एक्सप्लॉयटेशन पे, हॉरिजॉन्टल और जो कम तरक्की याफ्ता खित्ते हैं उनकी तरफ. एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड दैट वी लिव इन. मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो नजर आ रहा है बजाहिर, ये नजर नहीं आ रहा. Yes. Actually, I would take the liberty to kind of speed up because we need to get to your most recent work. तो हम इन चीजों को मैं इसको थोड़ा सा आप चलती रहे, मैं कमेंट करता रहता हूँ. इसके बाद ये हुआ कि आमतौर पे हमारी आर्ट की फील्ड में ये होता है कि जी आप पेंटर बन जाते हैं, या स्कल्पटर मुजस्मा साज बन जाते हैं, या वीडियो आर्टिस्ट बन जाते हैं, और उसके बाद फिर आप जो कुछ आपने कहना है उसी जुबान में कहना है, कुछ भी हो. ये जैसे शायर आप बनते हैं या नॉवल लिखते हैं, तो जो कुछ कहना अपना इजहार उसके थ्रू करना है. आर्ट में, कंटेम्प्रेरी आर्ट में ये हुआ पिछले 1-2 दहाइयों में
کہ آئیڈیا لیڈ پریکٹسز کہتے ہیں اسے, کہ اس کو ذرا تھوڑی سی فوقیت ملی کہ آپ کا آئیڈیا سب سے قیمتی ہے, سب سے سپرسیڈ کرتا ہے. جو آئیڈیا ہوگا وہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ اس کی زبان کیا ہوگی, اس کا میڈیم کیا ہوگا, اور اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. تو اصل میں زبان ہی جو ہے نا, جو انداز ہے کہنے کا, اصل معنی وہی ہے. جیسے غالب کے شعر آپ اس میں بات کر لیں گے کہ تصوف ہے یا اور موضوعات انہوں نے بنائے, لیکن اور لوگوں نے بھی وہی موضوعات لیے ہوں گے, وہ غالب نہیں ہے. بیکاز غالب کا جو انداز بیاں ہے, دیٹ از دا ریئل میننگ آف دا ورک. سو فارم جسے ہم کہتے ہیں, فارم از دا کانٹینٹ. تو میری پریکٹس بتدریج ان سالوں میں فرام پہلے پینٹنگ سے ڈیجیٹل پہ جانے کے بعد آئیڈیا لیڈ ہو گئی کہ آئیڈیاز نے ڈٹرمن کیا کہ کیا کام ہونا ہے. جیسے اس سے پہلے کام دیکھ رہے تھے, سنگاپور میں ایک سائٹ ہے جس کی ایک ہسٹری ہے. اس سے پہلے جائیں گے آپ, تو یہ والا ایک انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, سنگاپور والوں نے. وہاں پہ ان کی ایک بلڈنگ ہے جو کہ اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکینس, اس کو ہم کہتے ہیں آرٹ میں سائٹ اسپیسیفک آرٹ, کہ جو جگہ آپ کو ملے اس پہ رسپونڈ کر کے جو آپ کام بنائیں گے وہ اس جگہ کو اپنے اندر شامل کرے گا اس کانٹینٹ کے اندر. تو یہاں پہ سیریمنی ان کی ہوتی رہی ہے 1945 میں. برٹش جو نا when they surrendered to Japanese, when they surrendered to British, that ceremony took place, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہی وہ سیریمنی سپروائز کرائی تھی. اور 1965 میں سنگاپور ملیشیا سے الگ ہوا تو وہ بھی ہوا. تو اس ہسٹوریکل ریفرنس کی وجہ سے ایک میں نے ایک اور 9/11 کا بھی واقعہ تھوڑا عرصہ پہلے ہوا تھا, ایک امیجری کریٹ کی جو کہ سکلکل پیٹرنز کے بارے میں ہسٹری کے, کس طرح سے ہسٹری کے سکلکل پیٹرن میں شاید ہم قید ہیں ایک طرح سے. تو کام کا نام تنزن ڈپارچر لاؤنج ہے, لیکن اب ڈپارٹ کہیں کر نہیں پاتے. تو اس میں ہوتا یہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ونڈوز کی طرح کی چیزیں, ونڈوز اصل میں نہیں ہیں. یہ ویڈیو پروجیکشنز ہیں جو کہ ایلوژن کریٹ کرتی ہیں کہ آپ بلڈنگ کے تھرو دیکھ رہے ہیں, پنکچرڈ اسپیس ہے جبکہ نہیں ہے. اور اس کے اندر جو اصل جو کام ہے اس میں ویڈیو ہے, اینیمیشن ہے, جو کہ یہ ایک طرح کا تاثر اور دھوکہ دیتی ہے آپٹیکل ایلوژن کے تھرو, کہ جیسے یہ بلڈنگ اٹیچ ہے ایک ونگ کے ساتھ اور ہوا میں اوپر کہیں ہے اور وہ بلڈنگ موو کر رہی ہے. جیسے آپ پانی برج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور دریا کو گھورتے رہتے ہیں, سٹیئر کرتے ہیں, تو وہ موو کرنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے برج موو کر رہا ہے. تو اس طرح کا اس کام کے اندر ایک ایکسپیرینشل ڈیزائن ہے. اور جب وہ گھومتے ہیں دوسری طرف تو وہی ڈائریکشن چل رہی ہوتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت کے اندر وہ قید ہو چکے ہیں. So it's an experiential work. I mean, I can only describe it to some extent. Connecting this to your other works جو کہ ابھی اگلی 2-3 سلائڈز میں ہوں گی. آپ نے ایکسپیرینشل کی بات کی, تو اب آپ کی 2-3 کام جو ہم آگے دیکھیں گے وہ اسپیس سینٹرڈ ہیں, where the space becomes important and the person viewing it also becomes important because of the context of the space. So وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. روم فرام ٹیٹ ماڈرن. اس سے پچھلے بار جیسے جو کام تھا, تصویر جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ دو رخی ہوتی ہے, 2 ڈائمینشنل فلیٹ ہوتی ہے. اس کو ساتھ ایکسپیریمنٹیشن تھی کہ وہ 3rd ڈائمینشن میں کیسے چلی جائے. اس کے اس کو آپ سراؤنڈ کر رہے ہیں, لیکن نیکسٹ والے میں کیا ہوا کہ جو فوٹو اسکلپچر ہے وہ آپ کو سراؤنڈ کر رہا ہے بحیثیت نیکسٹ ون. کیونکہ جس دور میں ہم رہتے ہیں کنٹمپری آرٹ کے, اسپیشلی ویسٹ کے اندر, آرٹ کا جو آئیڈیا ویسے تو یہ کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں ویسٹ سے, اس کو ہم اپنے لیے کسی طرح سے کسٹمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے جیسے آرٹسٹ پھر اس پہ کامنٹ بھی کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے جو میوزیمز ہیں وہ بھی موضوع ہو سکتے ہیں, جو اسپیسز ہیں آرٹ دکھانے کی, دے themselves can become an art object. تو یہ illusion کریٹ کیا گیلری کے اندر. ایک اور گیلری کا جو آپ اندر دیکھ رہے ہیں, یہ لنڈن کا ایک میوزیم ہے, اس کا ایک کمرہ ہے. تو اس کام کا ٹائٹل بھی ہے روم فرام ٹیٹ ماڈرن. تو یہ فوٹوگرافکلی illusion کریٹ کیا ہوا ہے, اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتا. Again, a very seminal work that which is called The Viewer, The Viewing and The Viewed, which happened a few years ago at the Venice Biennale, اور اس کا counterpart create کیا گیا تھا Liberty چوک میں. اس کا راشد 2015. راشد, اس کے بارے میں آپ خود کچھ بتائیں. ہم میرے جیسے جن آرٹسٹ کی بات کرتا, کنٹمپری آرٹسٹ, بے شمار موقع ہیں ہمیں جو ملتے ہیں, اپرچونیٹیز ہیں ملک سے باہر, لیکن ان اپرچونیٹیز کو اویل کرتے ہوئے جہاں پہ ہم ملک کا کچھ نام تھوڑا سا پرسیپشن یا بہتر کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے وہاں ریسورسز ملک کے اندر نہیں ہیں جہاں پہ میرے جیسے آرٹسٹ وہ کام
یہاں کے عوام الناس کے لیے دکھا سکیں. کسی حد تک کوشش ہوتی ہے, لاہور بنالے ہے, کراچی بنالے ہے اور بشمار ایونٹس ہیں, لیکن ابھی بہت کمی باقی ہے گورنمنٹ کی حد تک پیٹرنیج کی. پچھلا امیج رکھیں تو اس سے پچھلا. تو مجھے یہ انوائٹ کیا گیا وینس بنالے جو کہ پریمیئر ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے, تو وہاں پہ ایک 16ویں 17ویں صدی کا پلازو ہے جس کے اندر کام لگانا تھا اور بنانا تھا. تو مجھے لگا کہ کسی طرح اس میں لاہور کو آنا چاہیے, لاہور یہاں نہ ہوتے بھی لاہور اس کے اندر ہو سکتا ہے. تو میں نے لبرٹی مارکیٹ کے اندر جو جگہ ہے بیچ میں, اسی کام روم کا ریپلیکا تیار کیا, اس کا ایلوژن جیسے پچھلے فوٹو اسکرپچر میں تھا, اور دونوں, یہ 2015 کی بات ہے اور آج سے 7 سال پہلے, تو دونوں طرف کی آڈینس کو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے کنیکٹ کر دیا. یہ ایسے ہے کہ آپ صبح کو اٹھیں, آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے جائیں اور وہاں پہ کسی اور کو پائیں. سو کمرہ وہی ہے, سیمولیٹڈ ہے دونوں طرف. یہ دکھائیں گے آپ کو. یہ والا کام میں خاص طور پہ دیکھنے کے لیے وینس گئی تھی, اور میں دونوں طرف تھی. میں نے یہ کام وینس سے بھی دیکھا, اس میں بھی میں آرٹ ورک بن گئی, اور پھر جب میں لبرٹی مارکیٹ میں تھی. نیکسٹ یہاں پہ یہ دونوں سائڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں, لاہور کی اور اس کی. یہ کام کا جو ٹائٹل ہے اصل میں وہ اردو ٹرانسلیشن ہے, انگلش ٹرانسلیشن ہے غالب کے ایک شعر کی. اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں, اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں, حیران ہوں کہ پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. تو یہ جو حیثیت ہے نا, ہم جس کو تفریق الگ کر دیتے ہیں کہ دیکھنے کا عمل, اور یہ دیکھ کس کو رہے ہیں, موضوع کیا ہے, اور دیکھنے والا کون ہے, یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے غالب کے نزدیک. تو یہ اس کی سمجھ لیں ویژول آرٹس کی ایک ٹرانسلیشن ہے, جہاں پہ جو ناظرین ہیں, جو کام دیکھنے آئے تھے, وہ خود کام بن گئے. دے آر دی آرٹ ورک ان دس. Visual and conceptual strategies evolved because I remained open to possibilities. Yes, so talking about possibilities, Rashid, میں پیچھے جا رہی ہوں. Yes, and then there came a turn where you started, and it, all these things are happening parallel also, but پھر آپ کے کام میں collaboration کی, اور باقی لوگوں کے ساتھ who have different kinds of expertise, ان کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملا. And this particular work becomes very important because آپ نے ایک dancer, Wayne McGregor, a dancer and a scholar, ان کے ساتھ آپ نے collaborate کیا at the Royal Opera House. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. میں رابعہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو خانے بٹے ہوئے ہیں ڈسپلنس کے, وہ 20th سینچری کی ایک چیز ہے. بیکاز جو لارجر مشینری تھی, اس کو یہ شاید چاہیے تھا کہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو چلانے والے ہیں, جو ورکرز ہیں, وہ مختلف خانوں میں ڈسپلن کی حد تک, موضوعات کی حد تک بٹے رہیں. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں 20th سینچری سے پہلے جو اس طرح کی تقسیم نہیں تھی, اسپیشلائزیشن نہیں تھی. تو میں ایز این آرٹسٹ, میں میرا لیبل تو آرٹسٹ کا ہے, میں انٹروڈیوس بھی ایز این آرٹسٹ اپنے آپ کو کرواتا ہوں, لیکن میں اپنے دماغ میں یہ لیبلز کیری نہیں کرتا تاکہ آپ کنفارم نہ کریں اور کسی ایک خانے میں نہ پھنسے رہیں. تو میں ایسے موقع کی ضرور تلاش میں ہوتا ہوں کہ جہاں میں اور لوگوں کے ساتھ, اور ڈسپلن کے لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کر سکوں. تو دس واز اے گریٹ اپرچونیٹی فار می ٹو کولیبریٹ ود اسٹیو رائک. ایک 90 سال کے بھی تو ہوں گے, ہی واز 84 اور 80 سمتھنگ بیک دین. اسٹیو رائک ایک بہت ہی لیجنڈری میوزیشین ہیں امریکہ کے, ورلڈ ریناؤنڈ, اور ایک اور ورلڈ ریناؤنڈ کوریوگرافر ہیں وین میگریگر. تو ان کے ساتھ یہ کولیبریشن تھی جس میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک کانسیپٹ دیں جس کے اراؤنڈ ہم کوریوگرافی کریں. تو یہ پوری اس کی بیلے کی پرفارمنس ہے, اور یہ صرف ایک صرف منظر ہے اس سیٹ ڈیزائن سے. اور جو نیکسٹ آئی تھنک آپ نے, لیکن اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جو آپ کو یہ گرڈ نظر آ رہی ہے, یہ illusion ہے in the sense that this is not two-dimensional. When you look at this theatre, opera house from one angle, this is the perspective you get of all of the grid becoming two-dimensional. Whereas اس کی ایک millimeter, micrometer کی calculation ہوئی بھی ہے to ensure that when you look at this from one perspective, it becomes like a two-dimensional grid that you see here. Okay, so Rashid, talking about this idea of collaboration and talking about these very micro details to becoming something larger, the whole and its parts, from macro to micro. We have one of your other very significant projects that we'd like to talk about now, the Expo, which is really talked about. یہ بھی recent project ہے آپ کا, جہاں پہ this is the Expo at the Pakistan Pavilion at the Expo Dubai, جس کے اندر ایک
part is installed in a way where they look apparently similar, but they're very different. Let's hear much more from Rashid. Your 24,000 pieces hain brought together in a way that creates a facade. This has been a great experience, though I was tempted to leave the project many times. It's not easy to work with governments. But I'm glad I stuck to my task. और मुझे बहुत खुशी है कि ये मैं कर पाया, बिकॉज पहली दफ़ा ऐसा हुआ मेरे करियर में कि चाहे और किसी भी किस्म की अचीवमेंट्स हों, अवार्ड्स हों, रिकग्निशन हो आर्ट की फील्ड में इंटरनेशनली, लेकिन इस फीलिंग से मैं फेमिलियर नहीं था कि आपका आर्ट किसी लोगों को खुश कर सकता है और उनको प्राउड फील कर सकता है, कि उनके लिए बायसे फ़ख्र हो सकता है और वो खुश हो सकते हैं. ये मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. जब ये काम कर लिया और लोगों के जब मैसेजेस आए और सुनने में आया कि बिकॉज पीपल फेल्ट हैप्पी कि उनके मुल्क की सही नुमाइंदगी हो गई. 192 ममालिक थे और उनमें हमें एक्सटीरियर के लिए पहला प्राइज़ मिला, और उनके बिकॉज वो हमसे एक्सपेक्ट वही करते हैं कि ख़ास तरह का माजी से मिलता जुलता कुछ हम बनाएंगे. सो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड ऑफ अस, एंड वेयर इज हम एक 7000 साल पुरानी तारीख़ हैं, हमारे खून में क्रिएटिविटी है, हम अपने दिन पे कुछ भी कर सकते हैं. इस काम की बिल्कुल जो उसकी जो खास बात, इंस्पिरेशन भी जो है, तहरीक जो है, वो भी पाकिस्तान की डाइवर्सिटी है. अक्सर औकात हम टीवी जो दिखाता है, स्पेशली न्यूज़ मीडिया, कि हम लड़ रहे हैं आपस में बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंसेस. Our differences, whether they are climatic, seasonal, racial, religious, ethnic, वो जिस किस्म की हमारे डिफरेंसेस हैं, या उसको डिफरेंसेस के बजाय अगर हम डाइवर्सिटी समझें तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी कमी नहीं है. जिस दिन हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि वो हमारी ताकत है, हम अगर अपने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, हमारे अपने जो फ़र्क हैं हमें, वो उनको इनहेरेंट डिफरेंसेस हैं, उनको एक्सेप्ट कर लें, वी कैन ऑल को एग्जिस्ट. जब आप ये ख्याल मान लेंगे तो आप इकट्ठे हो जाएंगे एक हारमोनियस ऑर्डर के अंदर. जिस तरह के जैसे मिस राबा ने बताया कि ये बज़ाहिर देखने में सारे जो यूनिट्स हैं ना, वो एक जैसे लगते हैं कि एक ही साइज़ एक शेप के हैं, लेकिन असल में ये 24,000 में कोई एक भी एक जैसा नहीं है. इनके अंदर एक फ्रैक्शनल माइक्रो मिलीमीटर्स में साइजेस के फ़र्क हैं और शेप के फ़र्क हैं, और माइन्यूटली हर एक जो पैनल है दूसरे से रंग में भी मुख्तलिफ है. जो पास के जो आपस में लगे हुए हैं वो लगेगा एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क हैं. लेकिन वो इकट्ठे क्यों हो जाते हैं खूबसूरत ऑर्डर में? बिकॉज दे पुट टुगेदर, दे केम टुगेदर इन अ हारमोनियस ऑर्डर व्हेन द एक्सेप्टेंस इज देयर फॉर ऑल दी डिफरेंट यूनिट्स. तो इस काम का जो टाइटल है वो है, उर्दू में है वादतुल शुहूद, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे यूनिटी ऑफ ऑल दैट अपीयर्स. So there is inherent complexity, something that apparently seems very simple, and it's made through a very simple order, but uski fragmentation, layering, geometry, depth, ये बड़ी crisp decisions हैं to create something that's so magnanimous, to create something that won the heart of millions. We have 10 minutes left, and we'll try to लाइट ठीक करवा लें, लाइट ज्यादा हो गई. क्या कम करनी है? यहाँ पे इस स्टेज पे और प्रोजेक्शन पे लाइट आ गई है. लाइट थोड़ी कम हो सकती है जी. Okay. Celebrities from all over the world came in to take a photo in front of the expo. Okay, so let's talk about something that's the most exciting for me. And all your portfolio is very exciting, Rashid. But ये particularly इसकी significance इसलिए है because ये वाला काम जो कि recent है और develop हो रहा है, ये हमें एक तरह से एक post contemporary एरा में ले जाता है, जहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, और आपकी प्रैक्टिस में ऑलरेडी इतनी सारी ड्रामेटिक टर्न्स आई थी. बट दिस पर्टिकुलर रीसेंट वर्क व्हिच वाज रिसेंटली एग्जिबिटेड एट द मैनचेस्टर इंटरनेशनल फेस्टिवल was something that that was a very unusual way of looking at art, and it wasn't even art as Rashid calls it. He coined a term called EART,
that kind of takes us beyond the dimensions of art. How he did that, let's just speak about it a little bit more. So this is a manifesto of possibilities where this is a very complicated chart. मैं इसको अक्सर पढ़ने की कोशिश करती हूँ और मुझे समझ नहीं आती. राशिद इसको थोड़ी सी आसान जुबान में हमें समझाएं. ये लाइट सब इतनी देर हाँ कम हो गई. देखिए ये थोड़ा सा मामला ज़रा एकेडमिक है इसका, इस वाली डिस्कशन का, लेकिन आई थिंक विल ट्राई टू मेक इट. मे बी आप कंडीशन ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे थे ना कि आर्ट कैसे परसीव हुआ है ओवर हिस्ट्री. एक परसेप्शन पाई जाती है, एक ख्याल पाया जाता है ना सिर्फ आर्ट के हलकों में बल्कि कॉमनली भी, कि जैसे आर्ट हमेशा से है. आर्ट विद ए कैपिटल ए वो सिर्फ एक 100-150 साल पुराना आइडिया है. अब कोई आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी इससे पहले भी बेशुमार पेंटिंग मुगल एरा में थी और वेस्ट में रेनेसांस के वक्त सिस्टीन चैपल थी, चर्चों में पेंटिंग्स थी, टू दी एक्सटेंट के एंशिएंट टाइम्स में गारों के अंदर भी पेंटिंग्स थी. तो आप कैसे कह सकते हैं कि आर्ट 150 साल पुराना है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्ट एज ए डिसिप्लिन, जिसमें कैपिटल ए लगाते हैं आर्ट के साथ, वो एक नया आइडिया है. इससे पहले लोग उसको आर्ट नहीं बोलते थे. इट वॉज वट एवर दे क्रिएटेड इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट, वो जिंदगी का हिस्सा थे. वो जिंदगी में कोई किरदार या कोई फंक्शन अदा कर रहे थे. जब तक आर्ट इजाद नहीं हुआ था, जहां पे आर्ट का फर्क यूं है पास्ट की क्रिएटिव प्रोडक्शन से, इमेजेस या ऑब्जेक्ट से, कि अब जो आर्ट क्रिएट होता है 100-150 साल से हमारे यहाँ या दुनिया में पूरी जगह, वो ऑडियंस को जहन में रख के होता है कि जी आप एक बनाएंगे फिल्म, वो सिनेमा में जाके देखेंगे. एक आप कॉन्सर्ट करेंगे, म्यूजिक तैयार करेंगे जिसको कॉन्सर्ट पे लोग जाके देखेंगे, या आप पेंटिंग्स बनाएंगे जिसको गैलरीज पे लगेगा दीवारों पे और जाके उसको देखेंगे. ये जो आइडिया है ऑडियंस के लिए क्रिएट करना, ये बहुत ही नया आइडिया, ये हमेशा से नहीं है. एंड दैट्स व्हाट मेक दीज क्रिएशंस एज आर्ट और टू बी क्लेम्ड एज आर्ट. पहले लोग अगर मंदिर में भजन सुनने जाते थे तो वो ये सोच के नहीं जाते थे वो कॉन्सर्ट सुनने जा रहे हैं, या वो चर्च में जाते थे वो देखने के लिए नहीं जाते थे कि सिस्टीन आर्ट देखने जा रहे हैं. वो उनका फंक्शन, उनकी एसोसिएशन रिलीजियस थी. या अगर मुगल एम्परर मिनिएचर पेंटिंग अपने बादशाहनामा में अगर बनवाता था तो उसकी ज़िंदगी को कलमबंद करने के लिए था, वो इसलिए नहीं था कि वो जाके म्यूज़ियम की दीवारों पे लगेगी. अब वो उसका फंक्शन चेंज हो गया. तो ये जो तारीख़ है बड़ी मुख्तसर है आर्ट की, और मैं ये समझता हूँ मेरी ज़ाती राय में ये इतनी छोटी ही रहेगी. ये अब एक वो वक्त आ गया कि इवॉल्व कर जाएगी वापस ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए. लेकिन एक बहुत बड़ी है, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है, तो मैंने इसको उससे अलग करके मैंने अपने तौर पे, अपने तई ज़ाती तौर पे एक कॉन्सेप्ट एक प्रेजेंट किया, कुछ दोस्तों की मदद से, कुछ और जहनों की मदद से मिलके, कि चले हम आर्ट को नहीं छेड़ते, वरना आर्ट के जो ठेकेदार हैं वो परेशान ना हो जाएं कि आर्ट की अब हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं. So I thought कि we can present a concept or a discussion outside the discussion of art. एक ऐसा मुबाहसा जो आर्ट के डिसिप्लिन के बाहर एग्जिस्ट कर सके, और वो ये है कि क्या क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर्ट के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, हम थ्रू आउट दी एजेस एरिस्टोटल के वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि आर्ट जो है वो मिमिक करता है, ये जो क्रिएटिव प्रोडक्शंस हैं वो मिमिक करती हैं लाइफ को. जैसे एक्टिंग अगर है, या गाना है, या डांस करना है, या ड्राइंग करना है, या पेंटिंग बनाना है, या फिल्म बनाना है, या वीडियो बनाना है, तस्वीर बनाना है, ये सारी जिंदगी को हम मिमिक, लाइफ को अपने इर्द गिर्द उसको हम मिमिक कर रहे होते हैं, उसकी नकल कर रहे होते हैं. ये बुनियादी तौर पे कह सकते हैं हम थ्रू आउट दी एजेस की ये क्रिएटिव प्रोडक्शन या आर्ट जिसे हम कहते हैं उसका एक सेंट्रल पॉइंट है. दूसरा जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि आर्ट एक तरह की इमेजेस की शायरी होती है. जैसे शायरी में, जुबान में जब आप कहते हैं कि जी अंग्रेजी में तो कहेंगे आप नसर में ही गोज टू स्कूल, लेकिन अब शायरी करेंगे तो आप कहेंगे स्कूल ही गोज टू. क्या किया आपने? स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जुबान का और वो सडनली पोइटिक हो गया. जब अब कोई चीज़ एक आम फहम, आम 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 रूटीन में हो, उसका जब आप स्ट्रक्चर चेंज करते हैं फॉर्म का, तो वो शायराना हो जाती है, वो पोइटिक हो जाती है. तो ये एक और खासा है सारे आर्ट का. तो लेकिन आर्ट अगर जिंदगी, अगर ये शायरानी जो चीज़ है, जो पोइटिक्स है, ये अगर जिंदगी के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है और ये लाइफ की मिमिकिंग नहीं है, जैसे हम पेंटिंग, ड्राइंग, फिल्म, वीडियो, सॉन्ग, सिंगिंग, डांस सब कहते हैं. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप खाना पका रहे हैं, या अगर आप कुछ सुन रहे हैं,
اگر وہ اس طریقے سے کیا جائے کہ اس میں فارم کا سٹرکچر چینج ہو جائے, وہ شاعرانہ ہو جائے, پوئٹکس اس کے اندر آ جائے, مختلف ہو جائے, آؤٹ آف دی آرڈنری ہو جائے, تو کیا اس کو ہم کریٹو ایکسپریشن یا آرٹ کہیں گے؟ So my point is that yes, that room has always been there, always throughout the history and has been done. It just has to be identified. ہمیں تاریخ میں وہ نکال کے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, یا ہم آج کے وقت میں کر سکتے ہیں, یا آج کے وقت میں کوئی بھی انسان کوئی کریٹو ایکٹ کر سکتا ہے. وہ بزنس کو ایسے اپروچ کر سکتا ہے کہ وہ ویکل بن جائے, وہ ذریعہ بن جائے اپنے آپ کو کریٹیولی ایکسپریس کرنے کا. ضروری نہیں ہے کہ آپ پینٹ کے ذریعے ہی اپنے آپ کو کریٹیولی ایکسپریس کر سکیں. تو یہ ہے وائڈننگ آف دا کینوس فار کریٹو ایکسپریشن. یہ ایک بحث ہے, ایک مباحثہ ہے, ایک ڈسکورس ہے, جس کی یہ بنیاد مینیفیسٹو یہ رکھتا ہے, ارٹ اے مینیفیسٹو آف پاسبلٹیز. تو اس کو السٹریٹ کرنے کے لیے میں نے 3 آئیڈیاز پہ کام کیا, 3 کانسیپٹ پریزنٹ کیے مانچسٹر میں پچھلے سال. تو 3 آئیڈیاز تھے, اور تینوں میرے ذہن میں 10 سال سے پک رہے تھے یہ آئیڈیاز, کہ کس طرح سے آپ دنیا کو شاید کسی قسم کی چینج مختلف چیزوں میں لا سکتے ہیں. آپ 20th سینچری کا بیگیج پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. کس طرح سے آپ اپنی سوچ کے ساتھ کچھ ایسے فیصلے اور ایسی چوائسیز لے سکتے ہیں جن سے آپ بظاہر کوئی ایوری ڈے ایکشن یا ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے, لیکن اصل میں وہ ویکل ہوگا, وہ ذریعہ ہوگا آپ کے کریٹو ایکسپریشن کا, بجائے اس کے کہ میں ہر چیز گیلری اسپیسیفک آبجیکٹ میں کروں. تو فار انسٹنس اس میں اندر ایک یہ کام تھا. 3 پروجیکٹس تھے. مائن از گلوکل, a grocery shop. ایک 1001 Minds, which is an app, a phone app, and the third one is Exit Global, which is a real estate hypothetical development plan. So اس کی ڈیٹیلز ہم ابھی دیکھتے ہیں. Mine is Global, which is a grocery shop in Manchester. I think اس پہ تفصیلاً بات کا تو میرے خیال سے وقت ختم ہو چکا ہے. شاید اس کے لیے نہیں, ہم کرتے ہیں, اس پہ بات کرنا ضروری ہے, because we need to see real life examples of how you made this manifest, this idea of identification of moments of creative expression in everyday life. It's important for us to know. یہ ایک کانسیپٹ تھا جس کے اندر ون ون ہے فار ایوری بڈی. تو وی ناٹ ان کانٹرڈکشن اور ان ریئل فائٹ ود کیپٹلزم, بیکاز وہ تو یہاں پہ بھی ہے. سو اس کے ود ان رہتے ہوئے کس طرح سے ہم 20th سینچری کا ایڈورٹیزمنٹ کا بیگیج چھوڑ کے, کہ ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے نہ لگیں, کیونکہ پیسے جیب سے تو جاتے ہیں کنزیومر کی, اور جو لوکل پروڈیوسرز ہیں, انٹرنیشنل پروڈیوسرز ہیں, سب لوگوں کا بھلا ہو, لیکن اینڈ آف دا ڈے جو کنزیومر ہے, جو خریدار ہے, وہ بینیفیشری ہو اس چیز کا کہ اس کو اچھی چیزیں, کوالٹی چیزیں کم پیسوں پہ ملیں, اور اس سے کسی کا نقصان بھی نہ ہو, اور جو بزنس کرنے والوں کا فائدہ. یہ کانسیپٹ تھا جو کہ بہت سارے بزنس اسپیشلسٹ, برانڈنگ اسپیشلسٹ, بلکہ کیا کہتے ہیں کمیونیکیشن ڈیزائن اسپیشلسٹ, میں دیکھ سکتا ہوں عارف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہی واز دا پارٹ آف دس. سو بہت سارے مائنڈس اکٹھے ہوئے اور ہم نے مل کے یہ ایک پروجیکٹ کیا, اور یہ 1 مہینے کے لیے اصل میں ایک سٹور کے طور پہ رن کیا گیا مانچسٹر میں ایز اے ٹیسٹ تھنگ. لیکن اس کی اصل اس کی جو کامیابی ہو سکتی ہے وہ اس صورت میں اگر یہ پلانٹ وائڈ گروتھ آف چین نہیں ہو, تو وہ پروڈکشن بڑھنے سے اور بھی سستی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں, میں ہمیشہ کیوریس ہوتی ہوں, جو آڈینس یا جو بائرز ہیں یا جو کنزیومرز ہیں, یہ جو آگے کام خرید رہے ہیں, وہ کتنے اویئر تھے اس کانٹیکسٹ کے کہ وہ ایک نان برانڈیڈ چیز ایک تو یہ لے رہے ہیں, اور وہ ایک مانچسٹر انٹرنیشنل فیسٹیول کا حصے کا پارٹ بن رہے ہیں. ان کے لیے یہ انفارمیشن اور یہ نالج اور یہ کانٹیکسٹ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, وہ ایک تو ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے ناظرین کو. آئی تھنک بہت اویئرنیس اب ایگزسٹ کرتی ہے سوشل میڈیا, اور وہ کام کیا ہی اس طریقے سے جائے کہ وہ اس میں انیویٹبلی اس کی سکسیس ہے اس دنیا میں, اس کا کرائٹیریا اس چیز پہ اس طریقے سے مینیفیسٹ ہو کہ وہ ان کو انگیج کرے اس سمجھ کے اندر کہ وہ اس چیز کا حصہ کیوں. لیکن وہ گیلری پہ نہیں جا رہے ہوں, وہ تو اتفاقاً ایک اسٹور پہ گروسری کرنے جا رہے ہیں,